Good afternoon, everyone. So let's start today's class. Today we are going to talk about very interesting topic, which is mergers and amalgamation. And I'm sure all of you must have heard about this word somewhere. सुना है ना कहीं तो papers में news में recent अभी इतने सारे amalgamations and mergers हो रहे हैं. For example, merger of Vodafone and Idea, merger of Disney and Hotstar. Yeah. Have you ever thought about कि क्यों ये mergers हो रहे हैं? What was the purpose behind them? क्या motive रहता है? What was the process of merging amalgamation? Compliances क्या क्या होती है? Legal compliances, taxation compliances, and everything. So today we're going to cover every aspect of mergers and amalgamation. Today we're going to talk about the basics of merger and amalgamation. Then we'll cover the compliance part, compliance companies act and also income tax act. Then we'll cover the accounting aspect of mergers and amalgamations. All right, guys. So let's start today's Saturday class. So start with what is merger. Merger is nothing but it is a combination of two companies in such a way that assets or liabilities of one company is merged with other companies in such a way that the existence of one company vanishes. In simple terms, when A and B combine, it will result either in A or B. जब दो कंपनी मिलती है इस तरीके से कि एक कंपनी दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको मर्जर बोला जाता है. Now, what is amalgamation? Both these terms are very synonymous. These are used interchangeably. बोले तो merger is not defined anywhere in the law in any act, but amalgamation is described. So what is amalgamation? Amalgamation involves basically more than two or more entities. In merger, there are only two entities are involved, but in amalgamation, two or more entities are involved. All right. So two or more entities are combined to form either a completely new company or they are both combined to with one company. Let's understand with the help of example. In merger, there are only two companies. A combined with B, resulting in A or B. But in amalgamation, A plus B plus C combined to either create a completely new company, which is company D, या फिर company B and C combined with company A. This is the thin line difference between merger and amalgamation. Otherwise, these both terms are used interchangeably everywhere. Now, what is the motive behind mergers and amalgamations? क्या पर्पस होता है merger and amalgamation में enter होने का? The very first is economies of scale, which is very obvious. When two companies are combining, there will be an increase in production, and because of this, the fixed cost, which is the major cost in industry, will be shared over a large number of products, resulting in reduction of per unit average cost of a product. All right. Second one is increase in revenue, which is when two companies are combining, they will have a greater market share. Their market share will increase. Because of that, their revenue will also increase. Third one is corporate synergy, which is the most important motive behind mergers and amalgamation. क्यों companies merger and amalgamation के लिए जाती हैं? Because they expect synergies. Now, what is synergy? It is basically the financial gain जो वो expect करती है after merger होने वाला है. What they think is 1 plus 1 will result in 3 and not in 2. ये main purpose होता है mergers और amalgamation के पीछे. कि जब दो कंपनीज मिलकर वर्क करेगी तो वो जो इंडिविजुअली जितना करती थी उससे मच बेटर परफॉर्म करेगी. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव होता है. एंड द फोर्थ वन is the diversification. Now, what is diversification? Suppose a company want to diversify in the area, then rather than creating a completely new company, it will go for merger and amalgamation because it is comparatively easy process as compared to establishing a completely new company and fulfill all the compliances. Now, types of merger. Can anyone explain the types of merger? Anyone know about it? It's okay. Let me explain. So the very first one is horizontal merger. Now, what is horizontal? In simple words, horizontal merger is the merger between two competitors. It is a merger between two competitors which are operating at the same level. Let's take an for example, merger of two pharmaceutical companies or a merger of two toothpaste companies. For example, let's take an example. If there will be a merger of Colgate or Close Up, then it will be termed as horizontal merger. Why? Because they both are direct competitors to each other. Okay. Now let's take a practical example. Arcelor and Mittal. Both these companies were in the business of steel manufacturing. These both are direct competitors to each other. But what they have done, they have combined, they have merged. Now the resulting companies, Arcelor Mittal, they have combined together, resulting in the company of Arcelor Mittal. Now Arcelor Mittal is one of the leading steel manufacturer, not in India but in the world. So क्या motive रहता है horizontal merger के पीछे? Is basically to reduce competition. तो जब कोई रिड्यूस करना चाहता है कंपटीशन के लिए देन दैट पर्टिकुलर कंपनी विल गो फॉर हॉरिजॉन्टल मर्जर, राइट? समझा? सेकंड वन इज वर्टिकल मर्जर. So horizontal merger is the merger between the competitors, but vertical merger is a merger between two companies which are involved in different stages of production or distribution.
In simple terms, जब कोई merger supply chain के अंदर हो रहा है ना, then it is come as vertical merger. Further, vertical merger is also of two types. One is forward integration and the other one is backward integration. Right? Let's understand with the help of them. Suppose there is a cloth manufacturing company. If it merges with the cotton supply is a raw material which is used in clothes, then it is considered as backward. And if cloth manufacturing is merged with retail stores, supermarkets, or retail outlets, then it is considered forward integration. Right. The practical example is merger of eBay and PayPal. eBay is an American e-commerce website, and PayPal is a online merchant payment providing. So the case is merger of ABC and Walt Disney. So Walt Disney is in the production of movies or animation, and ABC is a broadcasting company. It's providing the services of broadcasting. So what Walt Disney has done, it was merged with ABC, and the resulting company is Walt Disney. Walt Disney is still surviving, and ABC is merged with Walt Disney. Now the process of a merger. So everyone has understood about types of merger. Any doubt? See, I think in 2 minutes, if you can just brush it up, because since the people on the online channel were not able to hear you. So just in 2 minutes, brush it up. So we have discussed about the types of merger. There are total four types of merger. The first one is horizontal merger. Horizontal merger is the merger between two competitors. This is the very simple definition. The practical case of it is the merger of Taylor and Mittal. Both of them were in the steel manufacturing industry, and both of them were combined to form a new entity, which is ArcelorMittal. The next one is vertical merger. If a merger is happened between two companies which forms a part of a supply chain in simple sense, then it is considered as a vertical merger. Practical case is a merger of email and PayPal. eBay is an e-commerce platform and PayPal is an online payment merchant. So both of them has merged to form a new entity. The third one is concentric merger.
It is a merger between the two companies that are operating in same or related industries but providing different products. And this is the main difference between horizontal merger and concentric merger. In horizontal merger, two companies are providing same products, but in concentric merger, two entities are providing different products. The practical case is merger of City Corporation and Travelers Group. City Corporation is a banking industry and Travelers Group is providing investment or insurance services. Both of them are operating in the same industry but are providing different products. So that's why this is an example of concentric merger. The last one is conglomerate merger. It is a merger between two companies that are completely unrelated to each other. For example, practical case, a merger of ABC and Walt Disney. Both of them were operating in completely different industries, and that's what it is an example of. It is a case of conglomerate merger. Okay, guys, everyone understood? Now the process in merger and amalgamation, and this is very important to understand. जब भी अपन कोई merger and amalgamation देखते हैं, then अपन को पता होना चाहिए कि merger and amalgamation हो कैसे रहा है. Obviously, there is very in-depth process, but we can just take an overview of from management level क्या thought process रहता है जब भी कोई merger और amalgamation होता है. So the very first step is develop an acquisition strategy. सबसे पहले अपन एक strategy बनाते हैं कि why we want to go for amalgamation or merger. क्या expectations है हमारी merger से amalgamation से. For example, let's take कि मैं merger and amalgamation करना चाहती हूँ company because they want more profit. They want to become the profit earning entity. So उनकी acquisition strategy क्या हुई कि we want to be profit earning. Now we'll in the second step, what we do, we set M&A search criteria. Now what is search criteria? Will define what criteria will reflect our acquisition strategy. जैसे मेरी strategy की मुझे profit earning बनना है, तो मेरा criteria क्या होगा? Profit earning. वो companies जिनके profit earning हो, वो मेरा criteria बनेगा. And based on that criteria, मैं third में अपने potential targets define करूँगा कि ये XYZ तीन companies हैं जिनका profit earning बहुत अच्छा है और ये मेरी acquisition strategy को reflect कर रहा है. Now fourth one, begin with acquisition planning. Now from here the actual field work starts. अब अपन क्या करेंगे, उन जो अपनी potential targets है उनसे जाके contact करेंगे कि we want to merge with your company, we want to acquire your company. तो हमारी क्या क्या process रहेंगे, क्यों हम करना चाहते हैं, क्या purpose and everything. The step 5 is perform valuation analysis, and this is one of the most important process and one of the most important step in the process of merger and amalgamation. Why? Because अगर किसी कंपनी को अपन ने ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो ये नुकसान है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मर्जर होगा वो एंड में फेलियर की तरह रिजल्ट करेगा. और अगर अपन ने किसी कंपनी को अंडर वैल्यू किया तो जो कंपनी एक्वायर हो रही है उसके शेयर होल्डर्स के लिए नुकसान होगा. सो दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वे करेक्टली वैल्यू द कंपनी. द सिक्स वन इज नेगोशिएशन. आफ्टर वैल्यूएशन विल एंटर इनटू नेगोशिएशन कि हम इतने में रेडी आपकी कंपनी को एक्वायर और मर्ज बाय करने के लिए, आप कितने में सेल करना चाहते हो. सो विल डू द नेगोशिएशन. द सेवेंथ स्टेप इज M&A due diligence. M&A due diligence. Now this is also one of the most important thing in the process of merger and amalgamation. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना, क्योंकि क्या होता है कि अपन ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देख लेते हैं कंपनी के कि इतनी ग्रोथ है, इतना एक्सपेक्ट है, इतना प्रॉफिट अर्निंग है इनका, इतना रेवेन्यू है, बट अनलेस अंटिल वी गो डीप इनटू द कंपनी को पता नहीं चलता उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो, कुछ लॉस और लिटिगेशन पेंडिंग हो उसके खिलाफ, कुछ नॉन कंप्लायंस की उन्होंने लॉस हो जो कि बाद में अपन को पता चले हैं. बिकॉज ऑफ दैट मर्जर कभी-कभार फेलियर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. सो these three steps are very important, and from a chartered accountant point of view we have a great scope in these three steps. Valuation, we are appointed as a certified valuer, and for negotiations chartered accountants are hired as a consultants, and in M&A due diligence most of the time chartered accountants are hired. So there is a scope in these steps. The eighth one is purchase and sale context. Now after doing the due diligence, what we do is we'll enter into a contract with them कि हमने due diligence कर ली, हम satisfied है, now we'll want to buy your company. So for that purpose we will enter into contracts with them. Either it will be a purchase by share or it will be a purchase of assets. दो तरीके से purchase कर दे, या तो अपन उसके shares purchase कर ले या फिर इस company के assets and liabilities acquire कर ले. The ninth one is financing strategy. अब अपन ने डिफाइन कर लिया कि मुझे क्या परचेस करना है, तो असेट परचेस करने हैं या शेयर्स इशू करने हैं. अगर मेरे को असेट्स परचेस करने हैं तो कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा उस अमाउंट को. तो फाइनेंसिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इधर आई कैन रेज इक्विटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट से डेट उठा सकता हूँ. So these are the two ways of for the financial strategy. Come to step one. Step one. See, I would say that in each and every step there is scope for charters over here, because even step one, step two, step three, these steps forms part of consulting. So when you think of some consulting organizations like maybe BCG or Bain and Company, then they assist
their clients in developing all these strategies. Even all the big fours have a dedicated consulting line wherein you can step into all these areas and can assist your clients. So even step one, this is like developing an acquisition strategy. There would be a dedicated team for it. They'll be doing a market hunt of the potential companies, the client which wants to acquire, and then step three, developing the acquisition strategies and the targets. Come to step four. So beginning acquisition planning, valuation, as he said, that valuation is altogether a dedicated service line wherein value a company, and the most common method, which so far I have seen for valuation of companies, is like a DCF method, basis which you value a company, or discounted cash flow method. Then negotiations is again one thing. M&A due diligence, this is again a dedicated field because you have areas and scope for financial due diligence, for tax due diligence, and the teams are engaged to carry out these due diligence. And these are all together as separate service lines. Means it's one step, but it's a $1 billion industry, I would say, for multiple of the consulting organizations, because they earn a lot out of this M&A due diligence and they hire a lot of people. Valuation actuaries are more important. Even no, so actuaries are there, but at the same time, valuations can be done by CAs as well, and Big Fours also have their separate service line of valuations in which they hire both CAs, MBAs, it could even be actuaries for that. So, but valuations is again one area wherein you determine, and it's like an applied science, that how do you value a company? You take the past historical period data, you take into consideration the projections, you apply some discounting factors, and then you come at a value. It's again a very big world and very big area. All these areas are open for everyone to learn. It means I would say that the traditional areas, of course, we have, but these are the new areas in which you can think and deep dive into learning each and every aspect out of it. Come to the next slide. Purchase and sale contracts, right? So purchase and sale contracts, even I have assisted in drafting some of the purchase and sale contracts or reviewing, not even drafting, because generally lawyers are engaged for drafting of the purchase and sale contracts. These purchase and sale contracts are quite lengthy. They run more than 100 pages covering each and everything, the indemnity clauses, defining the entire business. So big law firms like the SAM or the CAM, they help in assisting all these drafting and all these. But we are from a client side, we are also engaged to review the contract, how it has been drafted correctly or not in favor of the client, and what all additions we can say from a tax standpoint. We look into that, whether the tax clauses which have been put are not unfavorable to our client. So these are the review aspects that we help in it. Financial strategy for acquisition and then closing the integration, because it involves a lot of compliances. Whenever companies amalgamated, you have to do a lot of compliances. You even have to approach court to get an approval out of it. Then you have to make various ROC filings for it. So all these steps in itself is kind of a service line in which you can learn a lot. Now the impact of merger and amalgamation. Till now what we have understood is टाइप्स ऑफ मर्जर, क्या प्रोसेस होता है मर्जर अमालगमेशन का. अब मर्जर अमालगमेशन के किन किन पे क्या क्या इम्पैक्ट रहता है वो देखते हैं. इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट. जनरली क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है. जब कोई कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, उसके मैनेजमेंट को भी अपना जॉब्स और अपने जो लेवल है वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि होता क्या, जो एक्वायरिंग कंपनी ना उसका जो मैनेजमेंट है वो कंबाइंड एंटिटी को मैनेज करता है. तो देयर आर केसेस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर क्लैशेस. ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग कंपनी का अलग अलग कॉर्पोरेट कल्चर होता है, तो जब वो कंबाइंड होती है तो डिफिकल्ट हो जाता है दो कॉर्पोरेट कल्चर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में. एंड सेम इज द इशू विद एम्प्लॉइज. और ये देखा गया मोस्ट ऑफ द मर्जर्स एंड अमालगमेशंस में कि एचआर इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि दो अलग कंपनी के दो अलग टाइप का वर्क कल्चर होता है, ऑपरेटिंग स्टाइल्स होती है, अलग डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है. तो जब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज कम अंडर वन रूफ, तो डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, प्रॉपर्ली वर्क कर पाए. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इश्यू इन मर्जर्स एंड अमालगमेशन. नाउ इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स. बेसिकली बोले तो अगर एक्वायरर कंपनी है जो एक्वायर कर रही है, अगर उन्होंने हेफ्टी अमाउंट दिया है तो उसके शेयर होल्डर्स लॉस में होंगे कि हमारा इतना कम शेयर हो गया. लेकिन इन द सेम केस अगर जो एक्वायरिंग कंपनी जो एक्वायर हो रही है उसके शेयर होल्डर्स हैप्पी होंगे. क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा अमाउंट मिला है उनके स्टेक के लिए. ना इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन, जो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल मर्जर के केस में क्या होता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मर्जर होता ही इसलिए ताकि कंपटीशन खत्म कर पाए। तो मर्जर्स अमालगमेशन से क्या इम्पैक्ट होता है, कंपटीशन कम हो जाता है। नाउ व्हाई डू मर्जर्स अमालगमेशन फेल, जो मैं बता रहा था कि अगर अपन ध्यान से नहीं करेंगे, ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे एंड एवरीथिंग, इसके से मर्जर्स अमालगमेशन रिजल्ट इन फेलियर। सो वेरी फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जनरली होता क्या है कि बिफोर अमालगमेशन एंड मर्जर कंपनीज डू हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि आफ्टर मर्जर हमारा प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा, हमारा शेयर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर इतना बढ़ जाएगा, हमारा वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर से हमारी कंपनी होगी, टॉप 5 कंपनीज में आ जाएंगे, टॉप 100 में आ जाएंगे। बट होता क्या है, जब एक्चुअल अमालगमेशन एंड मर्जर हो जाता है उसके बाद कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती एंड बिकॉज ऑफ इट इट रिजल्ट्स इन फेलियर। नाउ ओवरपेइंग, बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड। कैसे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी की, ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम ऐसा परफॉर्म करेंगे, हम मतलब आफ्टर मर्जर ऐसी हमारी कंपनी परफॉर्म करेंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट अपन ओवर पे करने को भी रेडी हो जाते हैं कंपनी को। अपन उसके लिए क्या करते हैं, मार्केट से डेट रेज करते हैं या फिर इक्विटी रेज करते हैं और कंपनी को बाय करते हैं। बट होता क्या है, इतना सारा पैसा मार्केट से उठाकर अगर अपन को वो रिजल्ट नहीं मिल पाता तो अपन लॉसेस में चल जाता है एंड बिकॉज ऑफ इट इट रिजल्ट्स इन फेलियर। थर्ड वन इज इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस। तो मैंने बताया था ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर मर्ज और अमालगमेशन नहीं कर सकते। We have to go deep into the company. We have to see क्या operations है उनकी, कैसे performance है, every compliance, everything. So अगर उसमें अगर inadequacy के साथ करेंगे ना तो बाद में it will result in failure. The fourth one is poor integration process. It is a post merger thing. मतलब merger से पहले अपन सब देख लेते हैं, due diligence है, कितना valuation होगा, क्या होगा, but merger होने के बाद जो सबसे बड़ी problem आती है that is integration. Now what is integration? Integration means यूनिफिकेशन। जब दो कंपनी कंबाइन होती है तो कैसे वो कोऑर्डिनेट करेगी, कैसे वो साथ में परफॉर्म कर पाएगी, क्या कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि इन ओरल सेंस इट इज वेरी इजी कि दो कंपनी मिल जाएगी, बट इन एक्चुअल इन प्रैक्टिकल इट इज वेरी डिफिकल्ट कि टू डिफरेंट कंपनीज आपस में आके कंबाइन हो रही है और आपस में कोऑर्डिनेट होकर एक वर्क कर रही है। सो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अगर इंटीग्रेशन प्रोसेस बेकार होगा तो मर्जर अमालगमेशन फेलियर बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, now so this is all about basics types of merger, the process in merger and amalgamation, why do mergers and amalgamation fails or impact. Now we'll cover the compliance point of view. First we'll start with Companies Act. What is the compliance of Companies Act in case of mergers and amalgamation? So in case of a company, if a company want to amalgamate, then it has to take the permission of NCLT. NCLT is National Company Law Tribunal. सबने सुना है, and ये तो it is a chapter in our company law with compromise arrangements and amalgamation के नेम से। So क्या होता है, अगर कोई कंपनी अमालगमेट करना चाहती है सबसे पहले वो एप्लीकेशन देगी किसको, NCLT को। NCLT उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, अप्रूव करेगा, फिर वो एक मीटिंग कंडक्ट करेगा। इन स्टेज 2 इट विल कंडक्ट अ मीटिंग। किसकी मीटिंग कंडक्ट करेगा, क्रेडिटर्स की करेगा और मेंबर्स की करेगा। दोनों की अलग अलग मीटिंग्स होती है। अभी मीटिंग का जो नोटिस होता है ये सबको जाता है, मतलब सारे क्रेडिटर्स को जाएगा, सारे मेंबर्स को जाएगा और सारे डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा। साथ ही साथ ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फिर ये सेबी को भी सेंड किया जाएगा नोटिस। इसके अलावा ये नोटिस सारे अथॉरिटीज को दिया जाएगा और लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके कि ये जो अमालगमेशन हो रहा है उससे आप एग्री हो, या फिर आपके कोई इश्यूज है अमालगमेशन को लेके, या आपके कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपको देना। फोर्थ स्टेज फिर होती है वोटिंग। हुआ क्या, सबसे पहले नोटिस गया एनसीएलटी को कि हमको अमालगमेशन करना है। एनसीएलटी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई क्रेडिटर्स की और मेंबर्स की। उसके बाद मीटिंग कंडक्ट होगी तो मीटिंग में वोटिंग होती है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन रेज करना है ना मर्जर अमालगमेशन के प्रोसेस में, तो दैट पर्सन शुड हैव मिनिमम ऑफ 10% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग। मिनिमम 10% है तो उसका शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, या वो पर्सन दैट नंबर ऑफ पर्सन जो रिप्रेजेंट करे आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 5% और मोर। अगर मेरा 100 रुपए का डेट है तो मेरे को कम से कम 5 रुपए वाले डेट के इतने परसेंट चाहिए जिनके पास 5 रुपए का डेट हो, तभी वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। राइट नाउ अप्रूवल। अब अप्रूवल कैसे होगा, तो डिफरेंट मीटिंग्स होगी, क्रेडिटर्स की अलग मीटिंग होगी और मेंबर्स की अलग मीटिंग होगी। तो अप्रूवल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो नंबर में मेजोरिटी होना चाहिए एंड सेकंड वो 3/4 इन वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए। दीज बोथ कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब एक तो वो इन नंबर्स मेजोरिटी में हो और वो जो नंबर है, वो जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इन वैल्यू 3/4 ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करे। तब अगर वो लोग अप्रूव कर देते हैं तब स्कीम ऑफ अमालगमेशन अप्रूव होती है। और ये डिफरेंट होगा, क्रेडिटर्स के लिए अलग होगा, मेंबर्स के लिए अलग मीटिंग होगी, दोनों में 3/4 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी इन नंबर दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तब अप्रूव होगी स्कीम। द सिक्स्थ स्टेज, फिर वो स्कीम जैसे अप्रूव होगी वो ट्राइब्यूनल को सेंड की जाएगी। ट्राइब्यूनल उस स्कीम को सैंक्शन कर देगा, सैंक्शन बोलते तो अप्रूव कर देगा, और साथ ही साथ वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताता है
वो टर्म्स एंड कंडीशन कहता है कि कैसे आपका स्कीम ऑफ अमालगमेशन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे किया जाएगा, कैसे आपका प्रोसेस होगा, कि कैसे आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर की जाएगी, पोस्ट इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस होगा, कैसे एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग बहुत सारी कंडीशंस वो बताता है, और वो कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती है फॉर अमालगमेशन। स्टेज 7 फिर जो ऑर्डर आता है ट्राइब्यूनल का, वो ऑर्डर अपन को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार कौन सा, जिस ओवर विच इज हैविंग अ जुरिसडिक्शन ओवर द कंपनी, और वो कब करना पड़ता है, विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन हमको ऑर्डर मिला उसके विद इन 30 डेज के अंदर अपन को वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है। एंड द लास्ट स्टेज कंप्लीशन होता है स्कीम का, और जब तक वो स्कीम कंटिन्यू रहती है, मतलब अमालगमेशन की स्कीम विद इन अ ईयर और विद इन अ मंथ कंप्लीट नहीं होती है, इट मे टेक अ टाइम। तो जब तक वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है उस टाइम तक अपन को रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रार के साथ हर साल। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम कंपनी एक्स पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल में बहुत कुछ है इसमें, बट इट इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू फ्रॉम It takes 2 years, maybe more than 2 years, to get an approval from the tribunal. Practically, we have seen that during the COVID time, from 2020, now the approvals are getting in place for the applications that were filed before 2020. It's a long drawn process. इसके अंदर आपको NOC लगती है, मतलब like creditors की approval, members की approval, tax department की NOC, बहुत सारे इसमें steps involved होते हैं, and उसके बाद the court conducts the hearing and grants approval. It may even reject if the court finds that the entire scheme is right in such a way for tax avoidance, then even the court may reject it. इसमें rejections भी काफी होते हैं, but at the same time approvals भी मिलते हैं, and you need to give reasons that why do you want to amalgamate. तो पूरा एक स्कीम बनती है, amalgamation scheme बनती है, कोर्ट के पास फाइल होती है, the company secretaries and the lawyers assist in all these tasks in it. from Ishika will take class. हेलो एवरीवन। अभी जैसे हर्ष ने बताया कि अपना मोर्जर का सेक्शन होता है 232, और भैया जैसे बोल रहे थे कि उसमें कम अराउंड 2 इयर्स लग जाता है, बट कई कई कंपनीज ऐसी होती है कि उनके लिए इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक मोर्जर में भी जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक मोर्जर किनके लिए होता है, जो 2 और मोर स्मॉल कंपनीज हो गई, या फिर कोई भी होल्डिंग कंपनी है जिसकी होली ओन सब्सिडरी के साथ वो मर्ज करना चाहते हैं, तो वो लोग फास्ट ट्रैक मोर्जर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक मोर्जर में अपन को अप्रूवल चाहिए होता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, आरओसी, लिक्विडेटर्स का, आरडी का। और सिमिलरली सेक्शन 232 के अकॉर्डिंग अपन को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है। शेयर होल्डर्स में एटलीस्ट 90% जिनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, या फिर क्रेडिटर्स जो 9/10 इन वैल्यू है, दोनों की अप्रूवल अपन को रिक्वायर्ड होगी फॉर द फास्ट ट्रैक मर्जर। अब जब भी अगर मर्जर होता है तो पॉसिबिलिटीज ये भी होती है कि कभी कभार लिस्टेड कंपनीज का भी मर्जर और अमाल्गमेशन होता है, तो उस केस में सेबी लॉज जो है वो भी उनको कंप्लाई करने होते हैं। सेबी लॉज में सबसे पहले अपन के लिए टेक ओवर कोड होता है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स ले रही होती है, तो उस केस में उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि उनको रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को भी ऑफर देना होता है ऑफ द टारगेट कंपनी। ऑफर जो है एटलीस्ट 26% कैपिटल होल्ड करने के लिए होना चाहिए। अगर एक्वायरर कंपनी जो है उसके पास ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो उसको एक्वायर करने हैं एटलीस्ट 5% और उससे ज्यादा शेयर्स टारगेट कंपनी में, तो उस केस में उसको ओपन ऑफर देना होगा। जब भी लिस्टेड कंपनीज and just explain this again. It contains percentages and all. अगर कोई भी एक्वायरर है, उसके पास उसको एक्वायर करने हैं, किसी भी कंपनी में एक्सरसाइज करना है 25% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट्स टारगेट कंपनी, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस उनको फर्दर जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी ऑब्लिगेशन होती है कि उनको ऑफर देना होता है फॉर होल्डिंग्स। जो ऑफर होता है वो एटलीस्ट 26% वोटिंग कैपिटल एक्वायर करने का होना चाहिए। उसके बाद में ये होता है कि अगर एक्वायरर के पास ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, तो उस केस में और उसको 5% या और ज्यादा शेयर्स एक्वायर करने हैं, तो उस केस में वो ओपन ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। So अगर less than 25% का अगर एक्विजिशन करना है, अगर ऑलरेडी 25% होल्ड कर रखा है, मतलब एक लिस्टेड कंपनी की केवल 5% होल्डिंग है and it wants to acquire more by 5%, तब टेक ओवर कोड लगेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं लगेगा, तब टेक ओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। So टेक ओवर कोड का ट्रिगर पॉइंट हुआ अपना 25%। if you want to acquire more than 25%. 25% और ऑलरेडी मेरे पास अगर 25% से ज्यादा उस कंपनी की होल्डिंग है and if I have to acquire 5% more, at least 5%, then I have to give this offer to the rest of the shareholders shareholders. ओपन ऑफर प्रोवाइड करना।
अब जब भी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, उनको सर्टेन प्रोविजंस और स्टॉक एक्सचेंज की तरह कंप्लाई करने होते हैं। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका जो ड्राफ्ट मर्जर एंड एक्विजिशन का वो होता है स्कीम, उनको एक रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना होता है और एनओसी से अप्रूवल ऑब्टेन करनी होती है, एनओसी ऑब्टेन करनी होती है एनसीएलटी से अप्रूवल से पहले। उसके बाद में जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको कंप्लाई करना होता है, जितने भी सिक्योरिटीज लॉज है उनको इंश्योर करना होता है कि जो भी सेबी के लॉज हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ओवरराइड नहीं होने चाहिए। प्लस उसके बाद में जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है प्री एक्विजिशन और पोस्ट मर्जर दोनों उनको प्रोवाइड करनी होती है डिटेल स्टॉक एक्सचेंज को ऑफ द होम कंट्री जहाँ पे सिक्योरिटीज उनकी लिस्टेड हो रही है। जो भी लिस्टेड कंपनी होती है उनको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि जो भी मर्जर या अमालगमेशन हो रहा है उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे, जो भी लिस्टेड एंटिटी की परफॉर्मेंस है या फिर जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे अभी हर्ष ने बोला था कि अपने हॉरिजॉन्टल मर्जर्स होते हैं, वर्टिकल मर्जर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स कंबाइन कर जाते हैं, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि एंटिटीज की डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो जाती है। जहाँ पे भी एंटिटीज की डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे मोनोपोली का थ्रेट होता है। तो इसके लिए कंपटीशन एक्ट आता है बीच में। जब भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर किसी भी टारगेट कंपनी प्लस एक्वायरर कंपनी का एसेट एंड टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर मर्जर एंड अमालगमेशन। जो कंपटीशन एक्ट होता है उसमें क्लियरली डिफाइंड है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की। उनके दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं। वो सेम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर कॉम्पिटिटर्स साथ में कंबाइन कर रहे हैं तो वो अपने हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स ये बोलते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स में सिमिलरली क्या डिफाइंड होता है, अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में मैं कंबाइन कर रही हूँ तो उससे क्या हो सकता है कि मैं उनको लिमिट कर सकती हूँ या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उनका प्रोडक्शन, जो भी उनका मार्केट शेयर है या जो भी उनके रिसोर्सेज है उनको एलोकेट कर सकती हूँ। और लास्ट होता है बिड रिगिंग। बिड रिगिंग क्या होती है कि नॉर्मली अगर कोई भी मर्जर या अमालगमेशन हो रहा है और उस केस में बिडिंग हो रही है तो मेरे साथ में अगर सपोज कोई एक और कॉम्पिटिटर बैठा है, मैंने उसके साथ में अग्रीमेंट कर लिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है या अमालगमेशन मेरे साथ होता है तो उस केस में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर या थोड़ा वो आपको भी डाइवर्ट कर दूंगा। तो ये होता है बिड रिगिंग। सिमिलरली अपना वर्टिकल अग्रीमेंट्स होते हैं। वर्टिकल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि अगर मैंने सप्लायर के साथ या फिर मैंने नीचे रिटेलर्स के साथ में मर्जर्स कर लिए तो उस केस में वर्टिकल अग्रीमेंट्स अप्लाई होते हैं। वर्टिकल अग्रीमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर मैं सप्लायर्स के साथ कर रही हूँ तो मैं उनके साथ अग्रीमेंट्स कर सकती हूँ कि आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, या फिर अगर मैं नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कर रही हूँ तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप एक्सक्लूसिवली मेरे ही प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इस वजह से कंपटीशन जो है उस पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो टू अवॉइड मोनोपोली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू पिक्चर। जब भी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होती है, अब अगर ऐसे सारी मर्जर्स एंड अमालगमेशंस में अपन कंपटीशन कमीशन के पास जाने लगेंगे तो हर मर्जर एंड अमालगमेशन के लिए अपन को अप्रूवल चाहिए होगी। तो इसीलिए कंपटीशन एक्ट क्लियरली खुद डिफाइन करता है कि कौन से मर्जर्स एंड अमालगमेशंस इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसके बाद में इन लोगों को परमिशन चाहिए होगी। कंपटीशन में कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर मैं किसी भी कंपनी के कंट्रोल कर रही हूँ शेयर्स या वोटिंग राइट्स, या फिर किसी भी कंपनी में मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल आ रहा है, या फिर अगर मेरी जो इस कंपनी के साथ में मैं मर्ज कर रही हूँ उस कंपनी के मर्ज करने के बाद में मेरी जो एसेट वैल्यू है वो 350 करोड़ या उससे ज्यादा हो रही है और मेरा टर्नओवर जो पूरे ग्रुप का है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है। अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो ही कंपटीशन कमीशन से अपन को अप्रूवल की जरूरत है, अदरवाइज कंपटीशन कमीशन से अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Tell me one thing, these are the thresholds like 350 crores of the asset value, the combined asset value and the combined turnover should be 1000 crores or more. So मतलब ये obligation किसके ऊपर है? For example, if I'm not aware of this kind of a provision and ये दोनों condition and है या और है? दोनों conditions होती हैं। दोनों ही conditions fulfill होनी तो पड़ेगी उसके बाद में ही आपको permission चाहिए। So अगर ये दोनों conditions just in case किसी भी company में fulfill हो रही है, then in every case I have to approach the competition commission or still या फिर या उसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि यार whether I'm getting a dominant position or not. No. We have to approach. Then the Competition Commission of India will see that whether they are having a dominant position or not. अगर उनको लगता है कि dominant position है तो वो approval ही नहीं देंगे for the merger and amalgamation. This is the sample NCLT order for amalgamation. जब भी amalgamation के लिए NCLT का order जाता है तो ये एक sample है कि किस basis पे अपन NCLT से permission grant करते हैं। Now अब अपन ने पूरा merger का पढ़ लिया, पूरा amalgamation पढ़ लिया, तो अब उसकी accounting आती है कि अपन इसको books में कैसे deal करेंगे। अब एंटिटीज में कहीं में एएस लग रहे होते हैं, कहीं में इंडेस लगे होते हैं। तो जहाँ पे एएस लग रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेबल एएस 14 और फॉर इंडेस वील गो फॉर इंडेस 10।
Now, as per AS14 दो टाइप में अमालगमेशन को डिफाइन करता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है कि अगर सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कोई भी ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफर हो रहे हैं टू द ट्रांसफरी कंपनी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि अगर शेयर होल्डर्स जिनके पास में 90% या उससे ज्यादा की फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की ट्रांसफरर कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स बन रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी के। थर्ड होता है कि जब भी ट्रांसफर होगा तो जो ट्रांसफरी कंपनी है, ये नहीं कि उनका बिजनेस क्लोज कर दे ट्रांसफरर कंपनी का, वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रही है, वो इंटेंडेड है टू कंटिन्यू द बिजनेस। जो भी कंसिडरेशन अपन शेयर होल्डर्स को पे करेंगे और द ट्रांसफरी कंपनी, वो डिस्चार्ज होनी चाहिए सिर्फ इक्विटी शेयर से, लेकिन जो भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट है शेयर्स का, वो अपन कैश में डिस्चार्ज कर सकते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए ट्रांसफर कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज की बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू में एडजस्टमेंट तभी हो सकता है अगर कभी हो कि उन दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, तो उस केस में टू यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसीज सिर्फ एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, अदरवाइज वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही वो मर्जर होगा, अगर पांचों में से कोई सी भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो वो परचेज में चला जाएगा। नाउ फॉर फर्दर टू डिफाइन कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग AS14 में डिफरेंट बता रखी है। तो अगर आप फॉल करते हो इन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो आप पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग मेथड लगता है। बाय नेम इटसेल्फ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो आपके अकाउंटिंग में चेंजेस करोगे वो बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है वो आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अमलगमेशन एक सिनर्जी क्या बेनिफिट ही लाना चाहिए। तो इन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट आप अकाउंटिंग में मिनिमल चेंजेस करते हो, और देयर इज ओनली वन कंडीशन, मतलब जो असेट लायबिलिटीज और रिजर्व्स होते हैं वो एज इट इज ट्रांसफरी कंपनी में बुक होते हैं ऑन देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। बट एक ही कंडीशन है जिसके अंदर आप एडजस्टमेंट करते हो, वो है अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट हो। नाउ फॉर अकाउंटिंग फॉर परचेज, अकाउंटिंग ऑफ परचेज में जो ट्रांसफरी कंपनी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वो फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन केस ऑफ मर्जर के अंदर बुक वैल्यूज पे जाना है, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, बट इन केस ऑफ परचेज फेयर वैल्यूएशन किया जा सकता है। हाँ। अकाउंटिंग फॉर परचेज में अगर आपका कंसिडरेशन नेट एसेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से ज्यादा है तो वो राइज करता है गुडविल को, और अगर आपका कंसिडरेशन नेट एसेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से कम है तो कैपिटल रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमलगमेशन, परचेज मेथड जो अपन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में यूज करते हैं, उसके अंदर आप रिजर्व्स की आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो, बट एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, जैसे वो ट्रांसफर कंपनी में शो हो रहे हैं एज इट इज वो ट्रांसफरी कंपनी में भी शो होने चाहिए। बट इन केस ऑफ मर्जर आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हो जिसके अंदर सारे रिजर्व्स एज इट इज ट्रांसफरी कंपनी में भी शो होने चाहिए। नाउ इंड AS 103, हमने इसका सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है क्योंकि ऑलरेडी अपनी सैटरडे क्लास हो रखी है इस टॉपिक पे। बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 तभी अप्लाई करता है जब आप बिजनेस की डेफिनेशन को मीट करते हो, और उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी दे रखे हैं कि जिनमें इंडेस नहीं लगता। अगर आपका जॉइंट अरेंजमेंट है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेस है, इंडेस 111, तो आप उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग होती है। और अगर आपने एक्वायर करें असेट्स तो वो इंडेस 16 में कवर होता है, उसकी अकाउंटिंग फिर उस इंडेस के बेसिस पे होती है। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर अपनी सब्सिडरी को FVTPL पे मेजर करती है तो उसके अंदर फिर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले इंडेस को फॉलो करते हो। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो in order to fall in this index, we have to make sure that the transfer is in the category of business.
तो इसके लिए इंड एस बहुत सारी कंडीशंस एंड डेफिनेशंस प्रिस्क्राइब करता है जिसमें आपको फॉल करना पड़ता है। तो अगर हम ब्रीफ में समझे तो ये 3 एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए हमारे ट्रांसफर में, तभी आप पे 103 लगेगा। इनपुट, कोर बिजनेस प्रोसेसेस एंड आउटपुट। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके पास इनपुट का पूरा कंट्रोल आना चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल्स हो गए, मशीन्स हो गए, उस अरेंजमेंट की वजह से उसको उस पर पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ कोर बिजनेस प्रोसेसेस, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आने से वो एक बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता। जो कोर बिजनेस है उस पर भी आपका पूरा कंट्रोल आना चाहिए। एंड थर्ड एलिमेंट इज आउटपुट। जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको इनपुट और कोर बिजनेस प्रोसेसेस को यूज करके आउटपुट क्रिएट करना है फॉर द कस्टमर्स, या फिर क्रूशियल पार्ट उसके बिजनेस में प्ले करना चाहिए। अगर आपके ट्रांसफरी जो आपका ट्रांसफर है उसमें ये तीनों एलिमेंट हैं, तभी वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में फॉल करेगा और इंड एस 103 उस पर अप्लाई होगा। तो उसके बाद ये 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। नॉर्मली एक्वायरर वो होता है जो परचेज कंसिडरेशन पे करता है, बट देयर आर सम कंडीशन, जैसे रिवर्स एक्विजिशन होता है जिसमें परचेज लीगल एक्वायरर कोई और होता है और अकाउंटिंग एक्वायरर कोई और होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफर कि वो लीगल एक्वायरर कौन है और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। सेकंड इज एक्विजिशन डेट। थर्ड, determining purchase consideration. Fourth, recognizing and measuring the identifiable assets, and recognizing and measuring goodwill or gain for a bargain purchase. तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर कंप्लाइंग इंड एस 103। तो 14 और 103 में यही डिफरेंस है कि 14 दो टाइप के मेथड्स प्रिस्क्राइब करता है जिसके अंदर आपको आप एक कैटेगरी में फॉल करते हो, बट 103 एक ही अकाउंटिंग मेथड प्रिस्क्राइब करता है जो अगर आप बिजनेस का ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो एक्विजिशन डेट, नॉर्मली एक्विजिशन डेट वो होती है जिस दिन आपको कंट्रोल मिल रहा है, दैट इज द ट्रांसफरी कंपनी गेट द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ द एक्वायरी कि वो डेट ऑफ कंट्रोल पहले भी ले सकता है कंट्रोल ओवर द एंटिटी या बाद में भी ले सकता है। नॉर्मली डेट ऑफ कंट्रोल माना जाता है कि जब आप परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हो, बट अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं एंड एक्वायरी फील्स कि उसको लेटर डेट चाहिए या पहले वाली डेट चाहिए, तो उस डेट से फिर एक्विजिशन डेट मानी जाएगी। और the another difference between 14 and 103 is कि इसमें मैंडेटरी आप परचेज मेथड यूज करते हो और आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे ही मेजर करना पड़ता है। और फॉर गुडविल द अकाउंटिंग इज दैट गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती और उसको आपको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ता है ईच ईयर। नाउ अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, there are different type of expenses such as service of lawyers, investment bankers, accountants, valuation experts, third parties including due diligence. All these expenses are not considered as a part of purchase consideration. You have to book them separately as an expense. Now acquisition, there is another type of acquisition which happens due to control due to acquisition of equity of shares. तो वो इंड एस 14 में कवर, AS 14 में कवर नहीं होता, वो AS 13 में कवर होता है। और 103 में उसके लिए फर्दर कुछ कंडीशंस एंड टेस्ट होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। Separate accounting standards for acquisition by shares and normal amalgamation, and business combination 103 is the one mother standard for both of these, but have different conditions and the criteria. Yes. Now we will discuss about the tax implications of the amalgamation. First of all, we will see the definition of amalgamation as per the Income Tax Act. Section 2, Clause 1B of the Income Tax Act defines the amalgamation.
which is that merger of one company with another company, or merger of two or more companies with a third company in such a manner that 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 all the three conditions are satisfied. First one is all the assets of the amalgamating company was transferred to the amalgamated company. Then second is all the liabilities of the amalgamating company will become the liabilities of the amalgamated company. And third one is important because यहाँ पर ये फुलफिल नहीं होती है most of the case में shareholders holding at least 3/4 in value of the shares of the amalgamating company will become the shareholders of the amalgamated company. So the point here to be noted is that we don't have to consider the shares which are held by the amalgamated company or its subsidiary in the amalgamating company. So let's take an example on the third condition. X Limited merges with the Y Limited, and Y Limited holds 20% of the shares in the X Limited. So in this case, to fulfill the third condition, that is at least 75% of shareholding of the amalgamating company will become the shareholder of the amalgamated company. We have to consider the remaining 80% of the shareholding of the X Limited, because 20% shareholding is held by the Y Limited. So we have to ignore that 20% portion, and we have to consider only 80% portion, and then we have to multiply it with the 75%. So we have to check whether the shareholders holding 60% of the value of the share capital of X Limited become the shareholders of the Y Limited. Then only the third condition is fulfilled. So this amendment, the words which are written within brackets, other than shares already held by the amalgamated company or its subsidiary. I remember this amendment came, I think, 5-6 years ago under the Income Tax Act. Prior to this language or the line was not there under the Income Tax Act, and it was creating a practical problem for the companies. Even though all the other conditions are getting satisfied, for example, all the assets are getting transferred, all the liabilities are getting transferred, but the third condition, which says that shareholders holding 3/4 of the value become the shareholders of the amalgamated company. Many a times what happens in a holding and a subsidiary relationship, the holding company is the 100% owner of the subsidiary company, right? Now subsidiary company का shareholder कौन है? Holding company है. अब वो कहता है कि holding 3/4 of the value becomes the shareholders. जब ये company इसमें amalgamate होगी, तो shareholder कौन है? Holding company. तो क्या holding company अपने आप को shares दे सकती है? नहीं दे सकती. And therefore the third condition was not getting satisfied under the act, and the officers were taking a position that your third condition has not been fulfilled, and therefore we will tax this transfer both for the transferee company and for the shareholder, and therefore and that was not the right intention of the law, and therefore this amendment was introduced I think somewhere in 2016 or 2017, जहाँ पे इन्होंने ये एक्सेप्शन डाल दिया था कि अगर होल्डिंग कंपनी या एक शेयर होल्डर खुद के ही शेयर सब्सिडरी में भी होल्ड कर रहा है, दूसरी कंपनी में होल्ड कर रहा है, तो वो अपने आप को तो इशू नहीं कर सकते शेयर, इसलिए उसको हटा के जो रिमेनिंग 3/4% ऑफ द वैल्यू निकलेगी उसका कंप्लायंस होना चाहिए टू क्वालिफाई और फुलफिल द थर्ड कंडीशन एंड टू मतलब फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8. So why we are emphasizing on the definition of amalgamation? When we come to the taxation aspect of the amalgamation transaction in the hands of amalgamating company and in the hands of shareholders of the amalgamating company. So if the definition of section 2 clause 1b if not fulfilled, then it will be taxed under the respective heads of the Income Tax Act. But when the amalgamation conditions are fulfilled, then tax will not. There will be no tax implication, no tax liability for amalgamating as well as shareholders of amalgamating company. See, there are three important terms over here. One is the amalgamating company. Second, shareholders of the amalgamating company, and third is amalgamated company.
सुनने में एक जैसे लगेंगे, देखो कंफ्यूजन क्रिएट होएगा, बट इसका ना everything has a different meaning and has a tax implication in it. जो इम्पोर्टेंट है, जस्ट थिंक क्या होता होगा, एक अमेलगमेटिंग कंपनी है और अमेलगमेटेड कंपनी है जिसके अंदर सब कुछ जा रहा है। तो अमेलगमेटिंग कंपनी के पास क्या होंगे, असेट और लायबिलिटी, ठीक है, तो असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जब भी कुछ ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स आता है, ठीक है, दैट इज वन। सेकंड, ये जो अमेलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास शेयर्स होंगे इस अमेलगमेटिंग कंपनी के। अब अगर पूरी कंपनी मर्ज हो गई तो जो अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनके शेयर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, उनको किसके शेयर्स मिलेंगे, अमेलगमेटेड कंपनी के मिलेंगे, तो उनके लिए भी ट्रांसफर हो गया, तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट this taxation for the shareholders of the amalgamating company and the amalgamating company, क्योंकि amalgamating company के पास asset liability land building सब कुछ हो सकता है जो ट्रांसफर होगा, तो इन दोनों का टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 47 के अंदर इनको ट्रांसफर नहीं माना गया है और उसकी कुछ कुछ कंडीशंस है which you can continue now to explain. Can someone tell about section 47? Only the heading part. Anyone? तो उसमें Transactions not regarded as transfer. Transfer not treated as transfer. Transactions not regarded as transfer. ऐसा है उसका. So section 47 tells about various transactions which are wherein capital asset is transferred from one person to another, but section 47 exempts those transfers. So we will talk about those sections only. So first one is amalgamating company will transfer all its asset to the amalgamated company. So as per section 47 clause 6, if the amalgamated company is an Indian company, then in that case there will be no capital gain tax in the hands of the amalgamating company. So there will no tax liability for amalgamating company. Now second is the shareholders of the amalgamating company. Shareholders will give their shares, or we can say that their shares will be cancelled because they will get the consideration from the amalgamated company. So for the shareholders, this will also not treated as transfer. Their shares will not be treated as transfer as per section 47 clause 7. So there will be no tax liability for both shareholders of the amalgamating company and and as well as amalgamating company. Now, the question arises. I want to for the second point, there are two conditions. Amalgamated company should be an Indian company, and the second one is that consideration in form of shares in the amalgamated company. This is again a most important condition because shareholders of the amalgamating company should get only the shares only from the amalgamated company, and only from the amalgamated company. Suppose someone says key shareholders of the amalgamating company will get shares from the subsidiary of the amalgamated company. Will this condition satisfy? Answer is no. In that case, tax implication will arise in the hands of the shareholders of amalgamating company. So we have to check both the conditions. Now, since the shareholders of amalgamating company will get the shares in the form of purchase consideration from the amalgamated company, so what will be the cost of acquisition for those shares, for the shares that they will get from the amalgamated company? Can someone, because all of you have read about the capital gain in Inter, what will be the cost for the shareholders of the amalgamating company? No, because one thing it's very practical. मतलब मेरे को किसी और कंपनी के शेयर्स मिल गए बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि वो दोनों कंपनी मर्ज हो गई, तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर? तो मेरी कॉस्ट तो वही होनी चाहिए जो कि मैंने ओरिजिनली अमालगमेटिंग कंपनी के अंदर जो मैंने शेयर्स लिए थे, तो इन दैट वुड बी द कॉस्ट. In that case, section 49, as per section 49, cost of shares of original shares of the amalgamating company will become the cost of shares of the amalgamated company. Now, second question is the period of holding for those shares in the hands of shareholders.
So again, since the cost is taken of the original shares of the amalgamating company, so earlier period of holding will also be considered for the shares of the amalgamated company. Now, for the amalgamated company will get various type of asset from the amalgamating company. So for those assets, what will be the cost of the those assets? So again, since there are no tax implication in the whole transaction, so what is the cost of the assets for the amalgamating company will become the cost of the assets of the amalgamated company. So in case of stock, what will be the cost for the amalgamating company will become the cost for the amalgamated company. And in case of depreciable asset, WDV will become the cost for the amalgamated company. And for all these assets, period of holding will also the period of holding for all these assets in the hands of amalgamated company will also include the period of holding of the amalgamating company as well. So यहाँ पर cost भी हमें amalgamated company की लेनी है, period of holding भी हमें cost भी हमें amalgamating company की लेनी है, period of holding भी हमें amalgamating company से लेना है. So in the tax implication, first we have discussed about the amalgamation portion and then taxation of the amalgamation portion. Now second provision is regarding section 72A, which talks about the carry forward and setup of accumulated loss and depreciation. Generally, if amalgamation happens, so one company is a weaker company and one is a healthy company. So there will be tax losses and unabsorbed depreciation with the weaker company. So if weaker company gets amalgamated with the healthy company, so what healthy company get incentive from this transaction? So healthy company will get to set off the accumulated loss and depreciation of the amalgamating company as well. So section 72A talks about that only. So section 72A applies in the case where there is amalgamation of first company having an industrial undertaking or ship or hotel with another company. Then second amalgamation of a banking company with a specified bank. Third one is one or more public sector company amalgamates with another public sector company. And the last one is erstwhile public sector company with one or more company. In this case, two conditions must be satisfied. First one is, first of all, there will be a share purchase agreement, which is under the strategic divestment scheme of the government. So first of all, there will be a share purchase agreement, and then after that, after the expiry of the lock-in period mentioned in the share purchase agreement, amalgamation has to be done within 5 years from the end of the previous year in which the restriction on amalgamation ends. So यहाँ पर I would emphasize on the B and D portion. B, C and D portion means यहाँ पर in the B part, government wants to minimize the number of banks. तो यहाँ पर हमको बोल सकते हैं कि to reduce the number of banks and to cope up with the NPA bank, to give the incentives to the amalgamated bank. तो उसके लिए एंट्री लाई गई. Then third one के लिए government want to again merge the weaker government company with a healthy government company, so to release the funds to monetize the assets. So this entry was also there, we can say that. And for the last one, D point, we have all heard about the strategic divestment scheme introduced by the finance minister. So for those cases, the fourth entry was put here so as to give the benefit of section 72A. And whenever and what is the crux of the 72A?
that the accumulated loss and unabsorbed depreciation of the amalgamating company will be deemed to be the loss and unabsorbed depreciation of the amalgamated company. So amalgamated company will get a lower tax liability after the amalgamation, we can say. So just to add on what he has said, जो D वाला point था strategic divestment, that was also introduced so that जो Air India का acquisition किया था by the Tata Sons group, since Air India had a lot of losses, तो वो losses को pass on करने के लिए this amendment was introduced under the act, wherein the public sector company which is having losses, such losses can be taken over by the company which is acquiring it. So intentionally उसको cover करने के लिए this is introduced. Even and now one practical example and a question for all of you. So for example, what I dealt was that there is an amalgamation which is happening. Both of the companies are engaged into like selling of software, right? Now one company had losses, second company, and this company got amalgamated into another company which is again into selling of softwares. So will the losses of this amalgamating company be allowed to be carried forward to the amalgamated company? Why no and why yes? Yes, because screen पे लिखा है. Yes. And no. No, not a public. ओवरऑल ए बी सी डी कुछ भी फुलफिल हो सकता है ना. प्राइवेट कंपनी भी हो तब भी तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, चाहे लिस्टेड हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, लॉसेस तो मिल सकते हैं, बट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं. वो जो कंडीशन है कि एक तो पब्लिक सेक्टर वाली कंडीशन है कि पब्लिक सेक्टर की नहीं है. दैट इज नॉट प्राइवेट के लिए भी लगता है ये सेक्शन पे. द आंसर इज स्टिल नो. The answer is written on the screen. The answer is because वो service industry में, that is not an industrial undertaking. Industrial undertaking, I think, has also been defined under the Act 72A में industrial undertaking की भी definition है. When I said कि ये लोग service industries में है, and therefore there is an ambiguity कि क्या service industry के अगर कोई companies आपस में merge हो रही है, तो क्या उसके losses मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, right? And therefore means although technically the section doesn't apply because वो केवल industrial undertaking के ऊपर apply करता है जहाँ पे दो industries आपस में merge amalgamate हो रही हो, but still you may still take an argument before the courts कि I am on a not a beneficial position as you compare to the industrial undertakings. Therefore आज के तारीख में service industry is also very prominent. And therefore, service industry के केस में you may take an argument before the courts कि मिलना चाहिए, but although technically law के अंदर अब तक वो provision है नहीं. So here is a definition of industrial undertaking: an undertaking which is engaged in the manufacturing or processing of goods. Then second is manufacturing of computer software. Then third is business of generation or distribution of electricity or any other form of power. Fourth is the business of providing telecommunication services. Fifth is mining. And sixth is construction of ships, aircraft, or rail systems. So here, company must be either an industrial undertaking or having a ship or hotel. Then only benefit of Section 72A will get to the amalgamated company. इसके अंदर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स, और ये इसलिए आया था बिकॉज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको बेनिफिट देने के लिए. बट अगर तुम देखो तो इसके अंदर सर्विस इंडस्ट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ. So what happens to service industry? Now even when I'm reading the definition, I'm thinking like there are huge losses in these e-commerce giants like say Flipkart. There are huge losses. अब अगर Flipkart को किसने acquire किया, क्या उसके losses मिल जाएंगे? Will Flipkart satisfy the definition of industrial undertaking? So these are points. Means इसलिए industrial undertaking was the important over here to see कि क्या उसके losses मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. And then specified bank is defined as either some bank is merged with the SBI or either a subsidiary of either with the
subsidiary bank as defined in the State Bank of India Act, or either with a new bank that government will come up with a policy so as to reduce, we can say that a strategic move by the government. Now, for getting the benefit of Section 72A, both amalgamating company and amalgamated company has to comply with certain conditions. And for the amalgamating company has to comply with the two conditions. First one is amalgamating company should be engaged in the business in which the accumulated loss occurred or there is unabsorbed depreciation for 3 or more years. So for should be engaged in business for at least 3 or more years. And second is that as on the date of the amalgamation, amalgamating company should have at least 3/4 of the book value of the fixed asset that it was holding 2 years prior to the date of amalgamation. So we have, both of the condition has to be seen on the date of the amalgamation, whether the amalgamating company is carrying on the business for 3 or more years, and it is having at least 3/4 of the book value of the fixed asset that it was holding 2 years prior to the date of amalgamation. For the amalgamated company, there are 4 conditions. First one is it holds continuously for a minimum. First of all, I would say these are the post amalgamation conditions that amalgamated company has to fulfill. First one is it holds continuously for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation, at least 3/4, that is 75% of the book value of the fixed asset that it gets from the amalgamating company in the scheme of amalgamation. Second one talks about the going concern criteria, that is the amalgamated company has to continue the business of the amalgamating company for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation. Third and fourth is from the perspective of the industrial undertaking. So third one says that amalgamated company has to achieve the production of at least 50% of the installed capacity of the undertaking of the amalgamating company before the end of the 4 years. So up to the 4 years, amalgamated company has to achieve production capacity at least 50% of the installed capacity up to the end of 4 years from the date of amalgamation, and to maintain the said minimum level till the end of 5 years from the date of amalgamation. And to certify that the company is fulfilling this condition, company has to furnish a certificate in Form 62, duly verified by an accountant from the year of achieving 50% of level of production, and from that year, Form 62 has to be filed up to the completion of 5 years from the date of amalgamation. So in this last condition, I'll give you a practical example. Means I just saw it in this November 22 in the return filing season. We have a client, Mangalam Cements Limited. It's a listed entity, and so Mangalam Timbers. It's also again another listed entity that got merged into Mangalam Timbers, into Mangalam Cements. And Mangalam Timbers had huge losses of, I think, around 55-56 crores. Now those losses were taken over by NCL, Mangalam Cements Limited. Now this compliance or the condition which has to be there of filing Form 62. So उनका appointed date था 1st of April 2019 से. The date of amalgamation was 1st of April 19. तो अगर ये conditions पढ़े तो ये कहता है that hold for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation at least 3/4 of the book value of fixed assets. चलो 2019 से लेके 20, 21, 22, 23, 24 तक उसको 3/4 of the value तक करना है. Continues the business for 5 years, वो भी हो जाएगा. To achieve the production of 50% of installed capacity, and then you have to make a compliance by filing Form 60. So जब हम अभी उसकी March 22 की return file कर रहे थे because transfer pricing apply हो रहा था, so the deadline was November 22 to file the ITR. Then this question came up that do we as an accountant or do we need to issue Form 62 then, because ये 62 दोनों तरीके से जाता है.
the company also has to certify and the accountant also has to certify कि उसने 50% की capacity कर ली है. When we called upon the data from them, तो उन्होंने एक certificate दिया कि April 22 के अंदर they have achieved the 50% production capacity. Now the question came that whether for March 22 do I have to give the certificate or not? And the answer is yes. Yes. And why do you say yes? From the we have to give the certificate from the year in which capacity level is achieved till up to the 5 years. To the capacity level got achieved in April 22. So the financial year ends on March 23. I was talking about March 22 return. Yes or no? Then we concluded that for March 22 return, the certificate is not required because इसमें law कहता है कि from the date of achieving the 50% level capacity, since उन्होंने April में achieve की थी, then we will issue it for March 23 और March 23 की idea आ जाएगी November 23 में, तब जाके हम ये उनको certificate देंगे, and it has to be filed up to 5 years from the date of amalgamation. तो 1st April 19 था, so March 20 चले गया, March 21 चले गया, March 22 भी चले गया, ये certificate नहीं लगा, तो अब ये balance 2 years जो है March 23 and March 24 के लिए certificate file हुआ. And मतलब there was a practical example that we dealt was कि भूल गए form 62 के बारे में, किसको पता होता है, तो मेरे को भी नहीं पता था. I got to know कि यार ऐसा ऐसा कुछ compliance करना होता है. So what happened in another case was that certificate was not issued and the assessing officer did not grant the benefit of the losses that had to be carried forward. This resulted in a huge tax liability because the losses were not allowed to be set off. Then we have to fight up to the tribunal level to say to get a favorable order from the tribunal saying that this is a procedural compliance that has to be done, and because of non-compliance of by not filing of Form 62 should not embargo the amalgamated entity to utilize the losses. Otherwise, the entire intention of the benefit which is there in the section which is granted by the parliament will go for a toss, and therefore the tribunal luckily favorably gave a favorable decision in the favor of the client that this is a procedural thing, but we should not miss all these compliances, because whenever we are looking from a holistic perspective, then the small things can pain a client if not taken care of, because litigation costs up to the tribunal and then having demands, paying all those, dealing with the officers, that all can impact, and therefore just ensure that this condition is also fulfilled. So whenever you are dealing with like a mergers acquisition, there are multiple sections, so you need to take a holistic view that what all sections are getting applied, what all compliances we have to do, with what are the time limit or the durations for doing the compliances. So all these things have to be kept in mind. So let's I give a snapshot of section 72A again. So 72A applies to the four amalgamations. Means 4 conditions as specified by and if these conditions are not satisfied, then the losses, then the benefit of losses will not be provided to the amalgamated company. And if suppose the amalgamated company has get the benefit in earlier years, so the same amount will be treated as income and taxed as tax in the hands of the amalgamated company in the case of violation of conditions of section 72. Now comes to the section 170A read with rule 12AD. In case of business reorganization, successor company को modified return file करनी पड़ती है. So in the year उस year में जब उसके पास order आता है, order of NCLT जब भी आता है, order of amalgamation जब भी आएगा, तो in spite of anything contained in section 139, in case of business reorganization, where prior to the date of order of High Court or tribunal, any return of income has been furnished by the successor that is the amalgamated company.
under section 139 for any year to which the order applies. Then such successor shall furnish a modified return in form ITR A in accordance with the said order within a period of 6 months from the end of the month in which the said order was issued. So, successor company, that is a amalgamated company, has to file a modified return considering the order, considering the order of the NCLT and has to file a modified return in form ITRA within a period of 6 months from the end of the month in which the order was issued. And accordingly, AO has to complete the assessment according to the modified return only. So if the AO has completed the assessment, then he has to again modify the assessment order and do the assessment according to the modified return. Correct. So this amendment came in this Finance Act 22, and so it's applicable from 1st of April 22. And then there was a circular also, and this rule 1280 was just introduced, I think, September 22, somewhere around that time. Prior to this, what was the need of introducing this new section? Because income tax law is based on practical aspects. Because earlier what used to happen is whenever there's an amalgamation that happens, it happens from a appointed date, right? For example, 1st April 19, I'm talking about a live example. 1st April 19 से amalgamation का effect आया because that is the appointed date. लेकिन उसका order आया July 22 में. अब July 22 में order आया तो मैंने March 20 और March 21 की तो returns मैंने कब की file कर दी. लेकिन मेरे को stand alone return file करनी थी because मेरे को उस समय पता नहीं था कि amalgamation का order मेरे favor में आएगा या नहीं आएगा. तो मैंने सब amalgamating entity की भी return file कर दी, amalgamated entity की भी return file कर दी. अब जब order आया which said that from 1st April 19 all these 3 companies will be treated as one company. Then I again had to file a return of income. I again had to prepare a set of financials. I again had to do a tax audit of that entity. And again I have to file a return of income. But there was no enabling provision. And this was creating a lot of debate and chaos in the entire industry that कोई provisions ही नहीं है इसको करने के लिए. केवल एक ही provision होता था. That was section 119 में जहाँ पे आपको सीधे letter लिखना होता था CBDT को to get an approval. और CBDT से अप्रूवल आते आते इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तब तक तो असेसमेंट भी हो जाता था, अपील भी चलना शुरू हो जाती थी, तो बहुत सारा इश्यूज क्रिएट होते थे इसमें. एंड दिस थिंग इट्स वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज़ वी आर फेसिंग इट. मींस एक केस मेरा ऐसा है जिसके अंदर मेरा अमालगमेशन का ऑर्डर मार्च 22 से पहले आ गया, अप्रैल 22 से पहले आ गया और एक में जुलाई 22 को आया. तो जिसके अंदर अप्रैल से पहले आया उसके अंदर भी वी रोट अ लेटर टू द CBDT और उसका अब तक मेरे पास अप्रूवल नहीं आया फॉर आस्किंग अ कंडोनेशन ऑफ डिले और getting a specific approval to file a modified return taking the effect of amalgamation. जिसके अंदर मेरा जुलाई 22 का ऑर्डर आया उसके अंदर I'm taking the benefit of this section and then we'll be filing revised modified returns by this January 23 or February 23 to complete the entire aspect. So this section got introduced to provide a benefit in these kind of amalgamation cases. Now comes to section 35DD. You must have read about this section in the PGBP section, PGBP head. So can anyone tell about this? Sir, read करके. Can anyone tell about section 35DD? Amalgamation expenses है ना वो 5 साल में अलाउ होता है amalgamation के करते. इतना सा तो section है. So as per section 35DD, SSC being an Indian company which incurs an expenditure wholly and exclusively for the purpose of amalgamation or demerger of an undertaking, then that SSC shall be allowed a deduction of that amount in 5 years, beginning with the year in which it was incurred. So one point to be noted in this section is that only the company which incurs this expense will get the deduction. So if the expenses are done by the amalgamating company, so will that expense will be allowed to the amalgamated company or not? अगर ये amalgamation related expenses अगर amalgamating company ने करे हैं तो will that expense
ये 5 years तक मिलेंगे, तो amalgamating company तो बंद हो जाएगी. Will that expense will be carry forward or will be allowed to the amalgamated company? Correct answer is no, because it is specific to the assessee. Or assessee that who incur this expenditure will get that benefit. Not necessarily. But why? So, for example, मैंने amalgamation की स्कीम फाइल की और amalgamating कंपनी ने एक्सपेंस एड कर दिया, ठीक है. मतलब 1 अप्रैल 19 मेरा इफेक्टिव डेट था, मैंने जून 19 के अंदर स्कीम फाइल की और फिर खर्चा इनकर करने लग गया amalgamating कंपनी, ठीक है. अब जब मैं इंडिविजुअल रिटर्न्स फाइल करूंगा, बिकॉज मेरे को नहीं पता फेवरेबल ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, तो चलो मैंने खर्चे को डिसअलाउ कर दिया फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि खर्चा अलाउ होगा या नहीं होगा. लेकिन जब अमालगमेशन का ऑर्डर आ गया, तब तो वो कंपनी एक ही हो गई. जो खर्चा अमालगमेटिंग कंपनी ने इनकर किया, वो जाके बुक्स में तो अमालगमेटेड कंपनी में जाके बैठ गया. बट सर उसके आइडेंटिटी तो मैनिपुलेट नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ अमालगमेटेड कंपनी क्या ले सकती है उस खर्चे को? नहीं सर. As per law को रीड करें ना सर, तब तो नहीं है. बट इफ वी गो इनटू प्रैक्टिकल केसेस ना, then maybe allow them after orders or other cases to visit them. preliminary expenses 35B and voluntary retirement प्रीलिमिनरी अलग है, डीआरएस एक्सपेंस अलग है, ये अमालगमेशन के एक्सपेंस है. अमालगमेशन के एक्सपेंस वैसे तो हमेशा अमालगमेटेड कंपनी इनकर करती है. मैंने कभी प्रैक्टिकली नहीं देखा कि अमालगमेटिंग कंपनी एक्सपेंस इनकर कर रही है. बट अगर करती भी है, then also I would like to argue that post amalgamation effect, post the favor order amalgamating the entities, मेरी एक ही कंपनी रह गई, तो मेरे को क्यों नहीं मिलना चाहिए उस खर्चे का बेनिफिट? ऐसे तो थोड़ा सा maybe technically if we read the very technical law जो words लिखे उसमें ना मिले, but maybe practically with the courts the court may give a favorable order. Yeah. इसलिए income tax act it's not straightforward. now come to the tax incentives and MAT credit. Tax incentives are either based on the business or area based. So we get various tax incentive either due to the we are operating in SEZ or because of section 80 we get various deductions. So those unexpired period of tax holiday will be allowed to the amalgamated company, except ATIA. ATIA will not be allowed to the amalgamated company. Now and MAT credit. If we read the section 115JAA, it will be MAT credit will be allowed to the assessee only. It is specific to the assessee. So MAT credit of the amalgamating company will be allowed to the amalgamating company only. There is no specific provision for carry forward of MAT credit to the amalgamated company. However, Mumbai ITAT in case of SKOL School Breweries Limited versus ECIT has endorsed a favorable view in this matter. Means it is allowed credit to the amalgamated company. So this is also ambiguous issue also we can. Because law में कोई specific express provision नहीं है MAT credit के carry forward के, but this tribunal, Mumbai Tribunal School Breweries gave a favorable order saying that the MAT credit of the amalgamating company will be allowed to be amalgamated entity. Now comes to the appointed date. Appointed date is the date of the amalgamation, from which assets liabilities will be transferred from the amalgamating company to the amalgamated company. Again, this appointed date is not described in the act. It is up to the either mentioned in the order of the amalgamation by the court, or it is up to the choice of the entities. They can take calendar date as a appointed date, or either it can be an event based. We get approval from the government, then that date will be the appointed date. It's written in the amalgamation scheme. जो scheme file होती है कोर्ट के पास, उसमें बकायदे scheme में लिखा होता है that ये हमारा appointed date है. And और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर देती है, बट 100% केसेस के अंदर एक अपॉइंटेड डेट लिखी होती है स्कीम के अंदर. एंड इस पे CBT ने भी MCA ने सर्कुलर निकाला था कि अपॉइंटेड डेट कैन बी टेकन एज अ एक्विजिशन डेट एज पर इंडियस 103. हमने पढ़ा है कि इंडियस 103
major acquirer takes the control of the acquiry, that date can also be taken as a appointed date also. So it is relevant for the taxability of income, because after that appointed date, income of the amalgamating company will be taxed in the hands of the amalgamated company. So taxability of income, and then to determine the market value of the assets for the purpose of stamp duty, and the similar concept is also a effective date. And effective date is the last date by which the company shall file a certified copy of order with the ROC, and do all the compliances. So we have to consider appointed date as the date of amalgamation and not the effective date. And it can be before the effective date, and it can be after the appointed effective date also. Now comes to the stamp duty. Uh, Stamp duty on the NCLT order. Uh, First of all, I would like to draw your attention towards the Indian Stamp Act. We have Indian Stamp Act, and that act gives the powers to the state to either adopt that act as it is, or do modification, or can have their own stamp act. So if we talk about the Rajasthan has its own stamp act, and in that Rajasthan has specifically mentioned that NCLT order will be liable for stamp duty in case of Rajasthan. But some states have not mentioned anything about the NCLT order in their stamp act. So in that case, two views can be taken. First view, that it is not leviable to stamp duty, and other is that it is leviable. So in case of Intra Limited versus ROC, uh, stamp duty was not leviable. And in case of Hindustan Liver versus State of Maharashtra, the stamp duty was leviable. So this is again a ambiguous issue, because it is not properly mentioned in the stamp duty. But in case of Rajasthan, it is specifically mentioned, and if we see the tribunal order, it is specifically mentioned in that order that this order is not giving exemption to the stamp duty. So that's all with our class today. Thank you. Well, this for everyone, no? Means even